Hello, good evening again. Sorry, I took a little bit of time to rejoin. Okay, so today we are going to continue with control systems subject. Let me just present my screen. So here we go. And in the last class, we have seen some of the responses of system, how system behaves to the various input signals like unit impulse response, unit step response, for a type 1 system, for type 0 system. We have seen all of those. Okay, so question can be asked like in 100 ways. Okay, so whatever we have learned, there are 100 ways to ask questions. So to counter those questions, we cannot take all the questions or examples. So for that you need to practice a lot. Okay, you need to practice a lot, gather the material, practice, practice and practice. That is the only thing to understand more and more about these things. Okay, my job is to just give you the basic idea of every concept, and if we go like this, then and then only we will be able to cover the syllabus. Okay, I hope you understand, and you guys are practicing as well. So today I will be just taking a recap of whatever we have seen in the last class, and we will learn one or two new concepts today. Okay, so let me just go to the page. Okay, I have my notes, so I teach you from my notes, guys. So yeah, now one thing you might know, या फिर आप सबको पता होगी ऐसा मुझे लगता है, और वो चीज ये कि जो पोल जेड प्लॉट है, पोल्स या फिर पी जेड प्लॉट, या फिर हम जिसे पोल जीरो प्लॉट कहते हैं. सो बाय ऑब्जर्विंग दैट पोल जीरो प्लॉट we can determine whether the system is stable or unstable. I hope you are clear about this, right? So agar zeros, let us suppose zeros are on the left side of the pole zero plot, then the system is stable or unstable. All the poles, all the poles and zeros, let us suppose all the poles and zeros are on the left side of the graph, or the on the negative side, then the system is obviously stable. If they are on the right side, or one of them is even on the right side, मतलब मान लीजिए कि चार पोल्स है, चार पोल्स में से तीन पोल्स लेफ्ट साइड में है, वन पोल इज ऑन द राइट साइड, अगेन दैट मेक्स द सिस्टम अनस्टेबल. राइट साइड में कोई पोल होना ही नहीं चाहिए. राइट साइड में अगर पोल है तो द सिस्टम इज अनस्टेबल. लेट अस सपोज देयर आर फोर पोल्स आउट ऑफ विच two are imaginary poles, imaginary what we can say conjugates. Okay, and they lie on the y axis, मतलब दो पोल जो है वो y axis पे है, and remaining two poles are on the x-axis itself, but on the left side. So will that be system stable or unstable? It will be marginally stable. It is critically stable. Yeah, we can call it in both ways. Okay, so here I will take one column as pz plot, and we will take unit step response. Guys, this is for the last equation that we have seen in the last class. Okay, so I'm just continuing. You can refer this in continuation, right? Like you will refer first PDF first and then this one. Okay, so for first condition, let us suppose we have this pole zero plot, and we have poles here on the left side, and they are conjugates. Okay, so in such case, just a second. Yeah. So in such case, the system will be, now here we have unit step response. So in unit step response, remember the reference axis, or the reference we take is at 1 or at step. Okay, so the system will appear, the response will appear like this.
This is under damped response and the system is stable. So this is first condition. If the poles are on the left side and they are not on the x-axis, okay, so then in that case system response will be like this. On the other hand, sorry for the extra drawings. So this is the second response in which we have a pz plot, and on this pz plot we have poles on the right side, so the system is unstable. Okay, and its response will look like this. This is a reference point, or we can say reference line, and the response will be like this. It will not stabilize. Okay, so this is the uh, under damped response, but it is unstable. Okay, now third one we have, let us suppose uh, the poles are on the y-axis itself, and these poles are repeated, like one pole is here, another pole is again here, and like this. These are repeated poles. Okay, so in that case the response will look like this: over damped response. Now my point of talking is, now you know, like why I'm drawing this figure. You know these figures, we have already seen these figures. So for critically damped, how the response is going to be. My point of talking is, see, this is unit step response, so we are taking reference point as a one, or the step, and let us suppose now this is a under damped unit impulse response. now जब हम impulse response की बात करेंगे, ओके, सो impulse response में हमारा जो एक्सिस रहेगा, एक्सिस ऑफ रेफरेंस, that will be zero axis. So this is the axis. Okay, so the graph will be like this here. Okay, so this is under damped unit impulse response. Okay, now this is all about it. मतलब जितना मुझे लगता है कि बेसिक्स बताना चाहिए, सो मैंने इन रिस्पॉन्सेस के बारे में आपको यहाँ पे बता दिया है. Now next topic that we are going to touch is steady state error. Now what is steady state error? So transient का जो पार्ट है वो हमने what we can say जो basics है वो clear कर लिए. Now we are moving to the steady state thing. Okay, so steady state में system किस तरह से work करता है. Now steady state error means the difference between desired response and the actual response at infinite time is called as a steady state response. मतलब हमने system को एक input दे दिया है and it has been not infinite time but a very long time. Okay, we have given input to the system and it has been very long time, and then we will check what is the output and what is the input, what is the difference between them. So that is called as a steady state response, and trust me guys, this question can be asked for 1 mark. I think it has been asked in the previous 2-3 years. I'm not sure, but steady state response का जो question है वो आ सकता है, easy रहता है. So please pay attention how we calculate steady state response. Now let us suppose we just give the heading steady state error. So it is difference between the desired response and the actual response, or if we want to write it like, so this is steady state error, it will be limit t tends to infinity r of t minus c of t. Now what is r of t? R of t is input signal in time domain, c of t is output signal in time domain itself. Okay, now if we want to
convert it into Laplace form. Okay, now we deal in Laplace form only, whether it is signal system or control system. So we are interested in finding out the error signal. So what is error signal? First of all, we'll see that. Let us suppose this is a system which has gain G of S. This is output C of S. Here we have a summing point and input R of S, and this is unity negative feedback. Here the signal will be E of S. मतलब this is input R of S minus output C of S. So यहाँ पे जो signal रहेगा that will be E of S. So how do we calculate this? See, हमने यहाँ पे लिखा है कि ESS is equals to R of t minus C of t. So अगर हम इसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखे या फिर लाप्लास डोमेन में लिखे तो E of S will be equal to R of S minus C of S, right? But if you see, C of S is what? C of S is E of S into G of S. मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हमारा गेन रहेगा that will be E of S into G of S, which is nothing but C of S. So हम कह सकते हैं कि C of S is equals to E of S into G of S. So यहाँ पे इस फॉर्मूला में हमें C of S की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है. So what happens? C E of S is equals to R of S minus C of S की जगह पे हम E of S into G of S रख देंगे. Now take this E of S into G of S to the right side, so it would be E of S plus E of S into G of S is equals to R of S. So take E of S common, it would be 1 plus G of S, 1 plus G of S यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, R of S upon 1 plus G of S. So this is the formula for steady state error or error signal. Okay, now this formula needs to be modified. Okay, now this formula, let us suppose if we convert it into time domain, it will look like this. This formula is for, guys, ESS limit t tends to infinity, and इसमें हमें R of t minus C of t करना था. This is C of t. So इसके लिए हमने ये formula find out किया है. Okay, so have you been through the concepts of इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, ऐसा कुछ सुना है या फिर किया है? ओके, रमन ने सुना है इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू. शुभम एंड शार्दुल, मोस्टली कंट्रोल सिस्टम में आपने सुना होगा या फिर सिग्नल सिस्टम में सुना होगा. आइदर ऑफ दिस सब्जेक्ट, मतलब इन दो सब्जेक्ट्स में आपने पक्का सुना होगा कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम होता है एक और फाइनल वैल्यू थ्योरम एक होता है. सो यहाँ पे बताने की मुझे सो यहाँ पे मुझे बताना ये है कि जब हम t tends to infinity टाइम डोमेन में लेते हैं, that is final value. Actually that is final value, right? But when we convert this into what we can say frequency domain में अगर हम final value निकालना चाहे, so it would look like s into anything, like s tends to 0. मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ इसे. सो हमारा ये जो फॉर्मूला है, इट विल लुक लाइक लिमिट s टेंड्स टू 0, ये s मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, बाकी का रिस्पॉन्स एज इट इज r of s into 1 plus g of s. Okay, so this is the formula for ESS, and this is final formula, guys. Okay, this is for final formula. You can note it down. Okay, so what to do with this formula?
हमें इससे क्या करना है अभी? तो इससे हमें 1/1 यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स देना है, यूनिट स्टेप सिग्नल हमें इसे इसके इनपुट पे देना है, then we have to give unit ramp response or unit parabola signal. So ये चार सिग्नल जब हम देंगे, so we'll get some constants and some terms, so those terms will be useful for solving the examples. Okay, so first of all, remember the formula. It is limit s tends to 0 s into r of s 1 plus g of s. This is the formula. So first thing we will do is unit impulse response. So unit impulse response means R of t will be delta t and R of s will be 1. Right? This is 1, not 4. So यहाँ पे R of s की वैल्यू हमें 1 रखनी है. So put the value of R of s, that is limit s tends to 0, s into R of s is 1 divided by 1 plus g of s. ठीक है. So अभी अगर हम यहाँ पे s is equals to 0 रख देते हैं, if we put s is equals to 0, then this complete equation or complete term becomes 0. So steady state error for unit impulse response is 0. ESS is equals to 0. Mark down this. So इसका मतलब क्या होता है कि unit impulse signal जो है, it is kind of a testing signal. How it is testing? मान लीजिए you have designed one system, okay, and you want to check whether this system works efficiently or not, whether this systems works properly or not. So what you will do, you will just give it a impulse signal as the input, and you have to get impulse signal as the output. If there is deviation, that means there is a problem in the system is not stable, or it's not working as desired. So unit impulse response में बेसिकली जो इनपुट है वही आउटपुट रहेगा, उसमें एरर कुछ भी नहीं रहेगा. एरर मीन्स डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कितना हमने इनपुट पे दिया और कितना हमें आउटपुट पे मिल रहा है. सो दैट इज एरर. सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स. सो यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स जो एरर स्टेडी स्टेट एरर है वो 0 ही रहेगा यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए. ठीक है. नाउ सेकंड वन वी हैव इज यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स. Just a second. All right. Unit step response. So unit step response में जो हमारा input है वो r of t is nothing but unit step signal, that is u of t. इसका अगर हम Laplace ले तो it would be 1 by s. R of s is equals to 1 by s. So अगर हम इसका error signal निकाले या फिर error steady state error निकाले, so limit s tends to 0 and s into r of s divided by 1 plus g of s is our formula. So keep all things as it is. Limit s tends to 0 s. Now r of s is 1 by s, so 1 by s divided by 1 plus g of s. So s से s कट जाएगा. s की वैल्यू 0 हम सिर्फ g of s में ही रख सकते हैं. So it would look like this. 1, this is 1 upon 1 plus limit s tends to 0 g of s. So this limit s tends to 0 g of s is called as kp, or position coefficient. Okay, and value of kp is limit s tends to 0 g of s. So it may be it may happen you आपको एक transfer function दिया जाए and they may ask find out the value of position coefficient. So you need to understand, you have to follow this procedure. You have to put the value of r of s as a 1 by s and then you have to follow the procedure. हम कुछ examples भी इसके लेंगे. Okay, this is unit step response. Third one we have is unit ramp response. So for unit ramp response, we just write
यूनिट रैंप रिस्पॉन्स। सो इसके लिए जो हमारा इनपुट रहेगा आर ऑफ टी, दैट विल बी टी इंटू यू ऑफ टी, पॉजिटिव रैंप, एंड इट्स Laplace transform is 1 upon s square, right? So ESS is equals to limit s tends to 0, s into r of s. I'm writing this formula for the last time, बाद में लिखूंगा नहीं मैं. Then limit s tends to 0, s into 1 by s square divided by 1 plus g of s. एक s यहाँ से कट जाएगा, एक s यहाँ से कट जाएगा. So 1 by s divided by 1 plus g of s, that will result into 1 upon s into s g of s. ये जो s है ना, ये बचा हुआ, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. Okay, I hope you understand this. If you have confusion, let me know. So when we put the value of limit s is equals to 0, so ये तो 0 हो जाएगा. So basically ये क्या बचेगा, 1 upon limit s tends to 0, s into g of s. So this is nothing but kv, or it is called as kv is equals to velocity coefficient. Okay, I hope you don't have any doubt regarding this, right? Similarly, if we want to calculate unit parabola response, ये एग्जाम में मोस्टली नहीं आएगा, यूनिट पैराबोला रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम इसे लिख लेते हैं, राइट? So unit parabola response will be fourth one, unit parabola response. So it is, guys, it would be r of s will be 1 by s cube for this. Okay, so ESS is 1 by limit s tends to 0, s square into g of s, that is 1 by ka. Ka is acceleration coefficient. Okay, so these three coefficients are there, kp, kv, ka. ka को ka के पूछे जाने की possibility सबसे कम है, but still we will learn that. Okay, now I will give you one example and you have to calculate the response for them, right? So let me just give you the examples. Example first, that is 1 upon s plus 2, find kp, kv and ka. Also find unit impulse response. So guys, unit impulse response would be what? Tell me. First thing is, what is g of s? G of s is this one. G of s is this one, 1 by s plus 2. This is our g of s. ठीक है? So without any confusion, unit impulse response will be equal to 0. Unit impulse response will be 0. Now we will go to the kp. Now kp is what? This is g of s. So we directly have to put the value of s is equals to 0 in this transfer function. Let me just write. See, this is answer. Unit impulse response, or for unit impulse response, ESS is equals to 0. यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए एरर सिग्नल जो है वो 0 रहेगा, या फिर स्टेडी स्टेट एरर जो है वो 0 रहेगा. नाउ व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट केपी, केपी इज नथिंग बट केपी इज इक्वल्स टू लिमिट s tends to
0 g of s. This is our definition of kp. So limit s टेंड्स टू 0, g of s हमारा है 1 by s plus 2, s की जगह पे 0 आ जाएगा, सो kp इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। kp इज इक्वल्स टू 0.5 आ जाएगा। गाइस कोई कंफ्यूजन कि kp किस तरीके से हमने निकाला? नो, दिस इज ओनली kp, दिस इज नॉट स्टेडी स्टेट एरर येट। तो स्टेडी स्टेट एरर क्या है? स्टेडी स्टेट एरर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ESS is equals to 1 by, it is not minus 1, sorry for that extra dash. ESS equal to limit s tends to 0, or no need to write s tends to 0 itself. Okay, just write 1 upon 1 plus kp। तो इस kp में ही वो लिमिट s tends to 0 आ जाएगा। सो यहाँ पे kp है 0.5, सो 1 upon 1.5, इसे अगर हम प्रॉपर फॉर्म में लिखे तो it would be 2/3. So ESS will be equal to 2/3 for unit step response, USR. Okay. Now can you calculate kV and Ka? Please calculate kV and Ka. तो guys kV कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? kV कैलकुलेट करने के लिए we have 0 and 0. All right. It should be 0 and 0. See, if if you're not getting the point, let me just explain you. We have the formula for kV, velocity coefficient. kV is equals to, we know that, limit s tends to 0, s into g of s. So यहाँ पे g of s कुछ भी रहने दीजिए, अगर इस s की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे ना तो ये 0 ही हो जाएगा, राइट? सो इट वुड बी लिमिट s tends to 0, s as it is हमारा g of s है s plus 2, सो s की वैल्यू 0, यानी कि कंप्लीट टर्म की वैल्यू जो है 0, तो kv इज इक्वल्स टू 0। अभी kv इज इक्वल्स टू 0 है तो स्टेडी स्टेट एरर क्या रहता है हमारा? 1 अपॉन kv रहता है सिर्फ, इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड 1 अपॉन kv रहता है। सो 1 अपॉन 0 यानी कि इनफाइनाइट, ESS will be infinite. Okay, now similarly we can calculate Ka, that is acceleration coefficient. Now I will give you another example, and in that example you have to find out all four responses. These are like Kp, Kv, Ka, and unit impulse response. Okay, so let us suppose the example is 1 upon s square into s plus 5. Find Kp, Kv, Ka, and unit impulse response. ESS for unit impulse response. Last one. Can you find out at least one? Please give it a try. It will not take more than 2 minutes. And guys, please remember one thing again. Okay, so the transfer function that I'm giving you, it is open loop transfer function of the system. System कैसा है? System है
यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, उस यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का जो ओपन लूप गेन होता है या फिर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, तो ये यहाँ पे दिया है। मान लीजिए कि अगर आपको कोई ऐसी सिस्टम दी जाए कि जिसमें आपको एक जी ऑफ एस भी है, एच ऑफ एस भी है, सो यू कैन नॉट अप्लाई दीज थिंग्स। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किस तरीके से यू यू कीप प्लीज कीप ट्राइंग ऑन दिस, और साइड में एक मतलब ऑब्जर्व भी करो। ओके, सो लेट अस सपोज आपको दिया है एक सिस्टम लाइक दिस। Okay, so this is g of s here, this is c of s, and यहाँ पे यूनिटी फीडबैक ना होते हुए कुछ और है, h of s है। ओके, सो इन दैट केस यू कैन नॉट टेक दिस g of s here, कैलकुलेशन के लिए ये g of s आप नहीं ले सकते। You need to convert this system into unity feedback system. I hope I have or we have discussed this thing कि किस तरीके से हम उसे unity feedback में convert करते हैं। I hope you remember that as well, right? So उसको पहले आपको unity feedback में convert करना पड़ेगा। unity feedback में convert होने के बाद में आपको जो transfer function मिलेगा यहाँ पे ऊपर g of s की जगह पे, so that transfer function you are going to use to find out these things kp, kv, ka. Okay, Raman has some answers. First one, uh, 0. K P K. You mean KP infinity? KP is infinity. Okay. KV is again infinity, and KA is 1/5. Okay. Anybody else? किसी को कोई problem? Especially Shardul and Shubham. You people are quite silent, so I'm not sure whether you are understanding or not. Are you okay, Shubham and Shardul? If you are not, then please tell me. We will revise the things or we will change the technique. We will take more examples. Shardul, Shubham, are you there? Okay, okay, fine, fine. Keep responding. Yeah, fine. So, can you solve this? Do you have confidence that, sir, I can solve this? Shardul and Shubham, do you have confidence? If not, then please tell me. I'll solve it. All right. I think you're not responding. That means maybe I need to solve it. Okay. So see, unit impulse response. So ये mostly zero ही रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे ई एस एस फॉर यू आई आर इज 0, ठीक। देन केपी निकालना है। केपी के लिए फॉर्मूला क्या है? केपी इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 इनटू जी ऑफ एस। आई होप दिस इज द फॉर्मूला, राइट? इज इट? केपी इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 इनटू जी ऑफ एस। तो जी ऑफ एस हमें क्या दिया है? लिमिट एस टेंड्स टू 0 रखो, एंड हमारा जो g ऑफ s है वो एज इट इज लिख दो, एस स्क्वायर एस प्लस 5। सो ये जो s इज इक्वल्स टू 0, 0 यहाँ पे हो जाएगा तो kp इन्फिनिटी ही आना है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। एस स्क्वायर है ना, तो s की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये कंप्लीट डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। 1/0 इज इन्फिनिटी, सो kp इन्फिनिटी आया। उसी तरीके से kv का जो फॉर्मूला है वो है लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू जी ऑफ s। मतलब एक s तो दूसरे s से कट जाएगा, लेकिन फिर भी डिनोमिनेटर में एक s रहेगा। इसका मतलब kv भी इन्फिनिटी ही आएगा, राइट। नाउ फॉर द लास्ट वन, दैट इज के ए। तो के ए के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? के ए, फॉर के ए वी हैव लिमिट s टेंड्स टू 0 s स्क्वायर इंटू जी ऑफ s। दैट मीन्स अभी देखो, लिमिट s टेंड्स टू 0 में एज इट इज लिख देता हूं, एस स्क्वायर भी एज इट इज है, 1/s स्क्वायर s प्लस 5। सो s स्क्वायर से s स्क्वायर कट जाएगा, s की वैल्यू 0 रखोगे तो के ए क्या आ जाएगा?
1/5 आ जाएगा। अगर आपको स्टेडी स्टेट एरर निकालना है, ओके, ESS निकालना है फॉर KA, फॉर एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट, सो इट वुड बी 1/KA, दैट इज 1/1/5, दैट इज 5, सो ESS will be 5 for this particular thing KA। बाकियों के लिए तो जीरो ही आ जाएगा। ESS जो है वो बाकियों के लिए आइदर जीरो आएगा, इन्फिनिटी आएगा, but it will not have a particular value। So these are the things, guys. I hope this was clear for you. Please try and practice as much examples as you can। जितना examples तुम सॉल्व कर सकते हो, प्लीज 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 सॉल्व द एग्जांपल्स, ओके। सो तभी जाके तुम्हें ज्यादा डाउट्स आएंगे और ज्यादा तुम्हारे डाउट्स क्लियर होंगे, ओके। So there is a suggestion from my side, and I told you about that I can provide you some things, study material and all those things. So I think I have sent to the Shardul, right? So if you need Shubham or Raman, you can ask me, all right? So please keep practicing. So next thing that is very very important thing in control system is that stability of the system. So guys, please keep in mind the topics that I'm gonna give you the headings of the topics. So please keep in mind that you are going to get at least I'm saying 2 marks. At most you may get 5 marks on these two three topics only. So if your boss in these topics, so half of the control system marks you are going to get. Like control system maybe ask for sometimes 8 marks, 10 marks, or even 11, 12, 13 marks, ठीक है ना? तो उसमें से इन टॉपिक पे एक क्वेश्चन तो हमेशा रहता ही है, ओके। सो व्हाट आर दोस टॉपिक्स? सो हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की, ओके। सो स्टेबिलिटी में दो टाइप की स्टेबिलिटी होती है। आई मीन स्टेबिलिटी तो एक ही टाइप की होती है, लेकिन हम उसे डिफाइन दो तरीके से करते हैं। एक होती है रिलेटिव स्टेबिलिटी, दूसरी होती है एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। सो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी यानी कि क्या? आइदर एस और नो। सिस्टम स्टेबल है, यस। स्टेबल सिस्टम स्टेबल है, नो। सो दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। बट इन रिलेटिव स्टेबिलिटी एस और नो तो हमें पता चलता ही है, बट प्लस हाउ मच। मतलब सिस्टम स्टेबल तो है, लेकिन कितना स्टेबल है, हाउ मच, दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, ओके। सो how do we find out relative stability and absolute stability? So guys, जिसमें हम रिलेटिव स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली आ ही रही है, बट नॉट नेसेसरी कि एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी निकालने के बाद में हम रिलेटिव स्टेबिलिटी बता पाएंगे, ठीक है ना? सो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन में लिखा भी रहेगा कि फाइंड आउट एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी और रिलेटिव स्टेबिलिटी, या फिर लिखा नहीं भी रह सकता है, ओके। सो अगर लिखा नहीं रहा है तो यू हैव टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट वन, ठीक है। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी स्टेबिलिटी आपको निकालनी है, राइट? सो देयर आर सम मेथड्स टू कैलकुलेट स्टेबिलिटी और टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। फर्स्ट वन इज RH criteria, or it is called as Routh Hurwitz criteria. Routh Hurwitz criteria, okay. So this comes under absolute stability. System is stable or not, it will only tell us that. Second one we have is Nyquist plot. Nyquist plots, this is the method we will learn about this. Third one we have is Bode plots, and fourth one we have is last one, that is root locus. Locus means path of roots. So all of these three comes under relative stability, ठीक। सो इसमें से मोस्टली नाइक्विस्ट या फिर बोडे, ये दो चीजें 2 मार्क्स के लिए आ सकती है। RH क्राइटेरिया हमेशा 1 मार्क के लिए ही आएगा, अगर आया तो। रूट लोकस का भी बता नहीं सकते, इट मे कम फॉर 1 or 2 marks, बट नाइक्विस्ट एंड बोडे दे आर गोइंग टू कम फॉर 2 marks, okay। So today we are just going to cover RH criteria, Routh-Hurwitz criteria, and for all other criterias we have future lectures, right?
So simply we have one question. We'll directly take question so that we can understand the things. That is C of S into R of S. One more thing guys, in RH criteria, RH criteria में we can find out the stability of any system, let that be open loop system or closed loop system, it doesn't matter. Okay, but when we learn about Nyquist and Bode plots, no, so we find out stability of closed loop system using open loop transfer function. So these confusions are there. We'll discuss about that later on. But here, whichever the transfer function you have given, you have to work with that and you have to tell whether this system is stable or not. You don't have to uh, like go into confusion or complexities, right? So let us suppose this transfer function we have is 1 upon s cube plus 2s square प्लस 3s प्लस 1. सो इस सिस्टम की स्टेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, whether this system is stable or not. You also know that stability can be defined by just looking at the pole zero plots, but here we can draw the plot, but that is a quite um, lengthy process, isn't it? Like we have to find out the factors of this system, this cubic equation and all those things, and then we have to plot those uh, poles and zeros, right? So how this RH criteria works? So according to RH criteria हमें क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर लो और उसे जीरो के इक्वेट कर दो. टेक द डिनोमिनेटर, इक्वेट इट टू जीरो. एस क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1 इक्वल टू जीरो है. नाउ रिमेंबर वन मोर थिंग. ओके, नाउ आपने मैथमेटिक्स में इक्वेशंस का अभी, आई एम कंसिडरिंग दिस एज अ पॉलिनोमियल. ओके, आई दिस इज नो मोर अ इक्वेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम. ये पॉलिनोमियल है, ऐसा सिंपली पकड़ के चलो. सो पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल के तीन तीन फॉर्म्स होते हैं. फर्स्ट फॉर्म इज स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म इज इंडेक्स फॉर्म, थर्ड फॉर्म इज कोएफिशिएंट फॉर्म. कोएफिशिएंट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें कुछ लेना देना नहीं है. इंडेक्स फॉर्म क्या होता है पता है? इंडेक्स फॉर्म में इफ लेट अस सपोज वी हैव सम टर्म्स मिसिंग, मतलब कोई टर्म अगर मिसिंग है, यहाँ पे एस क्यूब है, एस स्क्वायर है, एस है एंड एस रेस टू जीरो का भी टर्म है. सो इस तरीके का अगर एग्जांपल है, सो दैट इज इन इट्स इंडेक्स फॉर्म. मतलब उसके सारे जो इंडाइसिस है वो प्रॉपर ऑर्डर में है, क्यूब, स्क्वायर, रेस टू वन, रेस टू जीरो, लाइक दिस. अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 3s की टर्म नहीं होती, सो हम उस 3s की टर्म को कैसे लिखते? 0s. वी हैव टू राइट दैट. ठीक है. सो ये ये चीज ध्यान में रखो कि वी हैव टू राइट इट इन टू इट्स इंडेक्स फॉर्म. ओके, हैविंग सेड दैट, सो मार्क दिस वन, मार्क दिस वन, मार्क दिस वन एंड दिस वन. मतलब मैं एक प्लेस छोड़ के इनके ग्रुप्स बना रहा हूं. ठीक है, ये दो मैंने ग्रुप्स बना लिए. सो इसका भी करना क्या है? राइट हियर एस क्यूब, एस स्क्वायर, एस रेस टू वन, एस रेस टू जीरो. सो एस क्यूब का जो पहला कोएफिशिएंट है वो है वन, मैंने यहां पे लिख दिया वन. राइट, अभी यहाँ पे टू है तो मैं टू यहाँ पे लिखूंगा. अभी थ्री है, सो दिस इज इन माय सेकंड ग्रुप, सो थ्री मैं यहाँ पे लिखूंगा. बाद में जो लास्ट वन है वन मैं यहाँ पे लिखूंगा. गाइस समझ में आया मैंने इसको किस तरीके से यहाँ पे लिखा? सी, फर्स्ट वन आई राइट इट हियर, सेकेंड वन आई राइट इट हियर, थर्ड वन जो है मैंने फिर से यहाँ पे लिखा, फोर्थ वन यहाँ पे लिखा. मतलब जो ऑड नंबर के टर्म्स है ना, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सो ऑन, तो मैं पहले रो में लिखूंगा. इवन नंबर के टर्म्स जो है मैं सेकंड सेकंड रो में लिखूंगा. आई होप इट इज क्लियर, राइट? सो देन वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू. 2 into 3, 2 into 3 minus this into this. 2 into 3 is 6 minus 1 into 1 is 1 divided by this 2. So it is 5 by 2, right? So 5 by 2 यानी कि 2.5 आता है. So मैं यहाँ पे 2.5 लिख दूंगा. ठीक. So this is how we find out the next term. अभी इस नेक्स्ट टर्म की जो नेक्स्ट टर्म है, यूजुअली हम इसे फाइंड आउट करेंगे, लेकिन फॉर एवरी एग्जांपल के लिए जो लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म है ना, वही लास्ट टर्म होता है. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वन. अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आपको जीरो लेना पड़ेगा. ठीक है, 2.5 इंटू वन, अगेन 2.5 इंटू वन इज 2.5, 2 इंटू जीरो इज जीरो, डिवाइडेड बाय
2.5 itself, so it would be 1, राइट। तो मैंने 1 लिखा था तो 1 ही है, राइट। सो यहाँ पे हमें फर्स्ट रो में ऑब्जर्व करना है गाइस। फर्स्ट रो में अगर कोई साइन चेंज है, if let us suppose there is a sign change, that means the system is unstable. The system is unstable. Now we can also define that number of poles that are in the right side of the graph. Remember, or I will revise my words. अगर इसमें कोई साइन चेंज है, मतलब एक साइन चेंज है, दो साइन चेंज है। साइन चेंज मीन्स व्हाट? पहली जो टर्म है मेरी वो भी पॉजिटिव है, सेकंड टर्म भी पॉजिटिव है, थर्ड भी पॉजिटिव है, फोर्थ भी पॉजिटिव ही है। पहले कॉलम में कोई भी टर्म मतलब साइन चेंज नहीं हुआ है, प्लस से माइनस नहीं हुआ है, माइनस से प्लस नहीं हुआ है, प्लस ही है कंटिन्यूएशन में। इसका मतलब हमारे जीरो साइन चेंजेस मींस जीरो पोल्स आर ऑन द राइट साइड ऑफ द सिस्टम। तो ये सिस्टम कैसा हुआ फिर, स्टेबल और अनस्टेबल? राइट साइड में जीरो पोल्स है, सो सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल गाइस, कैन यू टेल मी? This is stable system. Very good. This is stable system. Now we'll take one example of unstable system. Okay, so this might be our last example, or we can take one more. No problem in it. Okay, so question is, so this is the question, and transfer function given is, let us suppose 1 upon s plus 2, s plus 1, s minus 3. Now guys, you can see s plus 2 means s is equals to minus 2, s plus 1 is equals means s is equals to minus 1, and s minus 3 means s is equals to 3। ये तीन पोल्स हैं। तो मैं अगर यहाँ पे पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ करूं, राइट, तो पोल जीरो प्लॉट में जो मेरा एक पोल है वो यहाँ पे आ जाएगा 3 पे, दूसरा पोल यहाँ पे -1 पे आ जाएगा, और तीसरा पोल यहाँ पे -2 पे आ जाएगा। इसका मतलब ये सिस्टम जो है वो श्योर शॉर्ट अनस्टेबल है, राइट, अनस्टेबल ही है। सो हम इसे व्हाट वी कैन से आरएच क्राइटेरिया से किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं? मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, ये नाम थोड़ा सा मुश्किल नाम है ना, ठीक। So this is already in parts, so we have to find out the equation, right? So s plus 2 को s plus 1 से मल्टीप्लाई करो। सो प्लीज मुझे बताना अगर मैं कुछ गलती करता हूं। तो s इंटू एस इज एस स्क्वायर, s इंटू वन इज s, टू इंटू एस इज टू एस, टू इंटू वन इज टू। सो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मुझे s माइनस थ्री के साथ में ये मल्टीप्लाई करना है, सो इसको हम 3s मानेंगे, राइट। सो 1 डिवाइडेड बाय s square into s is s cube, s square into minus 3 is minus 3s square। अभी ये s plus 2s जो है वो 3s हो गया, 3s into s is positive 3s square, right। Then we have 3s into minus 3 is minus 9s। Lastly we have plus 2 into s is 2s, and plus 2 into minus 3 is minus 6, right। So if we simplify this, it would be 1 upon s cube, s square की टर्म कट गई, तो यहाँ पे 0 s square लिखना पड़ता है, माइनस 9s प्लस 2s इज 7s माइनस 6। सो ये हमें मिल गया एक ट्रांसफर फंक्शन इन आवर प्रॉपर फॉर्म। तो यहाँ पे अभी हम इसका डिनोमिनेटर ले सकते हैं, राइट। सो इसका डिनोमिनेटर लेके जीरो, जीरो के साथ इक्वेट करना ये सब करना नहीं है, सिर्फ ग्रुप्स बना दो इसके। अभी मैं ग्रुप्स, दिस वन इज द फर्स्ट वन, इसको छोड़ दो, इसका दूसरा, दिस इज वन एंड दिस इज द वन। सो write it in the tabular form, s cube s square s रेस टू वन s रेस टू जीरो। गाइज अगर ये यहाँ से s रेस टू फोर से शुरू होता है ना, तो यहाँ पे आपको s रेस टू फोर से शुरू करना है। ओके मतलब जहां से ये शुरू हो रहा है वहीं से आपको शुरू करना है। ओके सो इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 1, इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 0, इसका जो कोएफिशिएंट है वो है -7, और इसका जो कोएफिशिएंट है वो है -6। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। अभी हमारा पहला स्टेप क्या होता है, 0 इंटू -7 माइनस 0 इंटू सॉरी -6 इंटू 1। सो 0 इंटू -7 0 रहेगा, -6 इंटू 1 इज -6, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 डिवाइडेड बाय 0, तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा।
राइट। सो इन्फिनिटी हो रहा है तो अभी क्या करना है गाइज, आर वी इंटरेस्टेड हियर इन वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू हो हमें उससे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है फर्क। वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन द साइन, साइन ऑफ दैट वैल्यू, उस सिस्टम की या फिर उसकी वैल्यू क्या है। ओके, साइन चेंज हो रहा है या फिर नहीं। सो हाउ डू वी डील विद दिस? सी, मैं यहाँ पे एक्स ना जीरो ना मानते हुए इसे एक्स मान लेता हूँ, राइट। सो माइनस 7x प्लस 6 divided by x, that would be equal to minus 7 plus 6x. So it would be minus 7 plus infinity, x जीरो है ना, x की वैल्यू तो जीरो है यहाँ पे। तो मुझे बताना, पॉजिटिव इन्फिनिटी में अगर हम -7 सब्ट्रैक्ट करें, सो जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी? ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव वैल्यू, है ना। पॉजिटिव इन्फिनिटी में से 7 अगर माइनस करें तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी आएगी। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू? वैल्यू विल बी पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि वैल्यू जो है वो यहाँ पे इस प्लेस में, हाँ गाइस, यहाँ पे वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी है, राइट। जस्ट अ सेकेंड, s raised to 1, ओके, आर वी डूइंग दिस वैल्यू इज हियर नॉट हियर, ओके। ये जो वैल्यू है ना s प्लस इन्फिनिटी की, तो ये यहाँ पे है, राइट। हम थर्ड प्लेस के लिए निकाल रहे हैं ना। सो ये पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है। नाउ लास्ट वन, जैसे कि हमने कहा था कि जो लास्ट की टर्म रहती है वही इस टेबुलर फॉर्म में लास्ट की टर्म रहती है जो कि -6 है। सो डायरेक्टली लिखना है हमेशा, लेकिन अगर हमें कैलकुलेट करना ही है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इंफिनिटी इंटू -6 -0 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी। सो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कट जाएगा, फिर भी क्या बचा? -6 ही बचा, तो यहाँ पे -6 आएगा। सो गाइज, इफ यू ऑब्जर्व इन दिस particular column, how many sign changes are there? One sign change is there at last, मतलब पॉजिटिव वन था, जीरो का कोई साइन नहीं होता है तो हम उसे साइन चेंज कंसिडर नहीं करेंगे। पॉजिटिव इंफिनिटी है, लास्टली वी हैव नेगेटिव इंफिनिटी, दैट मीन्स देर इज वन साइन चेंज, मीन्स there is at least one pole which is on the right side. There is at least one pole which is on the right side. That is why this system is considered as unstable. I hope this is clear for you. Okay, and this is the important point, guys. मतलब जो those are very complicated things, and it's very vast syllabus. Okay, but ये जो stability के criteria है ना, चार RH criteria, Nyquist, Bode and root locus, they're very what we can say, easier one as compared to them. So focus on these, ठीक है। तो इसमें RH क्राइटेरिया में एक दो और टाइप के एग्जांपल्स होते हैं। सो इन तीन चार टाइप्स के अलावा मैंने कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखा है, मतलब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफी सारे सालों के रेफर कर चुका हूं, तो तीन चार टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। सो मैंने दो टाइप के तो ले लिए। दो टाइप के कौन से? पहला तो जो था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। सेकंड इसमें क्या है कि कहीं पे एक वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो जीरो आ जाएगी तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि करें क्या आगे जाके। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वैल्यू, वी आर इंटरेस्टेड। Hello, I think there was a problem in my network. Am I audible, guys? Last 2 minutes. Am I audible? Uh, okay, okay.
ओके, नाउ आई शुड बी ऑडिबल। सो मैं कहाँ तक था, मतलब मैंने आपको कुछ बताया, 2-3 टाइप्स थे, ऐसा कुछ बता रहा था ना मैं आरएच क्राइटेरिया के, ठीक है। सो 2 टाइप्स मैंने यहाँ पे बता दिए हैं आरएच क्राइटेरिया का, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। रिमेनिंग 2-3 टाइप्स जो है उसके 2 एग्जांपल्स या फिर 3 एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट नाइक्विस्ट एंड पोलर प्लॉट्स एंड वी विल बी फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स। ओके, ये जो 4 टॉपिक्स है ना, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। I hope, guys, that was quite helpful for you. And that's it for today. You can leave the class. Thank you. Bye bye. And